in the record. So welcome everybody. Apologies for the tech hassle, but hopefully things will go smooth now. So as you know that we are holding this session to present this study that has been done over the course of 2 years, trying to understand the traditional system of governance in Ladakh, the Goba system or the Yulpa system, and we will explain more about what the system is, what is its relevance in today's context, and what does it mean also for an ecologically sensitive and a very different landscape of Ladakh. But also some broader lessons about local democracy and governance in general, not just in India, but also in context of many other places which are thinking about local democracy and governance in many aspects. So hopefully we'll get into those aspects during our presentation and also when we have some time for question and answers. I am Shrishtee Bajpai and I am a member of Kalpavriksh, and I am your host for today, and I will be asking questions from our panelists and speakers. And we will try to have it in a form of a conversation, not a formal presentation. And then we'll open up space for you as an audience also to join in and comment, and however you would like to come in. The request to everybody is that in case at any point you're not able to follow the conversation, because it's going to be between English and Hindi at some points. Whenever it goes to Hindi, we will translate it and put it in the chat. But in case there is any confusion or clarification required, or any point when we are not able to understand, please feel free to come in and comment on the chat box and use that space for engagement. So yeah, let's maybe get into this conversation as soon as we can. We hope to maybe do this around 50-55 minutes, and then we'll open this up for comments and questions. So why did we do this study? And I think that's an important one to get into, because it forms this background about why this study of traditional governance is important. And we know that in India, across many places, there are these unwritten and sometimes written codes of conducts of how communities take decisions, how they govern their landscapes and everyday life. And many of these are rooted in people's customs, their traditional practices, very different ways of being and living. And we know that there are these customs, rules, and practices that take care of the land and the water, and many a times they are very respectful of the rest of nature and how people maintain that relationship. We are also aware of the limitations of many of these traditional systems, like the issues of gender, women not being involved, and some of these aspects we will uncover also in the Goba aspect. We know issues of caste. Many a times communities from the marginalized sections are not able to participate in these spaces. We also know of class as a discrimination that is a challenge and a weakness of many of these traditional systems. When the Indian Constitution was being drafted, looking at the people's traditional governance system was a very important aspect. And that's why in many areas of India's sixth schedule was applied, where people could continue with their customary practices. So our objective with this study was to first of all understand that in the context of this transformation of local governance that India has seen over the last 3 decades with Panchayati Raj and 73rd and 74th constitutional amendments, what does it really mean for the local governance? What is the relationship of these institutions which have come about with a very good intention, but wherever the traditional systems have existed, how these two institutions have actually spoken to each other, how they have worked together. So that was our broader intention to understand. But with the focus in Ladakh, the idea was to also see it in a context of this very unique landscape, very different landscape, a trans-Himalayan landscape, and what
is the present status of Ladakh's traditional governance system. Also, because there's so many changes happening in the governance system in Ladakh. So, what is the relevance in this socio-political, economic transformations that are being undertaken? And to understand this interface, as I was mentioning, between Goba, Panchayat, also because Ladakh has autonomous hill development council and now the UT administration. What are these multiple layers of governance doing actually in terms of everyday governance? Are they good, bad, or what improvements need to be done? And also to understand the role of place-based governance, which is to say that how does governance respond to the changing climate, ecology, and other such aspects. And so we tried to first of all look of whatever documentation is available, and there was very limited documentation, and henceforth the process began. And it's a collaborative study between 5 organizations, which is Snowleopard Conservancy Trust India, Nature Conservation Foundation, Local Futures, Ladakh Arts and Media Organization, and Kalpavriksh, which is based in Pune. And we wanted to do this as a collaborative study so that all of these organizations working in very different domains can actually inform this study from their knowledge, from their expertise. And so we, over the course of 2 years, did this study trying to understand the status, as well as go in different regions of Ladakh also to see where if places closer to Leh have a different sort of a system than places that are further from the Leh city, and what changes and transformations take place. And we spoke to the Gobas, to the current Gobas, to the ex-Gobas, and 2 of them are with us. We spoke to the bureaucracy, we spoke to the governor at that time, the governor of Ladakh, we spoke to various civil society actors, and this study is informed by inputs from all of those people. So yeah, this was just to give you a bit of a background about why we did it and how a little bit we did it. And now let's get into aspects of trying to understand what this system is. So I would like to first welcome Tsewang Stobdan, who is a secretary of a newly formed Goba association, and he himself is a Goba of Alji. Stobdan, this conversation will be in Hindi, but we will translate it and put it in English for all of you in the chat box. So please take a look at the chat box. Stobdan, can you hear me? आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा ले. एक मिनट स्तोबदान ले, आपका माइक ऑफ है भी, तो आप उसको जरा ऑन कर दीजिए. माइक पो अनम्यूट जरा अनम्यूट जर दोते माइक पो का तो जन ले आ माइक पे का क्रॉस संतत के पाते क्रॉस पर met kan zat तो स्तोबदान ले, अगर जब आपका माइक ऑन हो जाए, तो अगर आप गोबा सिस्टम क्या है, गोबा क्या होता है, और उसके मेन फंक्शंस क्या है, उसके बारे में बताएं सबको, तो अच्छा होगा. And for people who don't understand Hindi, I am asking who is a Goba from Stobdan, because he himself is a Goba, and what are his key functions, and we will translate and put that in the chat. Okay, Stobdan, बोल सकते हैं. Good afternoon to everybody. सबको जुड़े. तो सबसे पहले मुझे आप लोगों ने मौका दिया इस क्वेश्चन आंसर सेशंस में पार्ट लेने का. तो मेरा नाम त्सेवांग स्टोबदन. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि गोबा सिस्टम जो है वो बहुत पुराना सिस्टम है, जो कि आज से तकरीबन 200-300 साल पुराना सिस्टम यहाँ पे चलते आ रहा है. तो अभी आशीष जी ने मुझे फंक्शंस के बारे में बताने के लिए बोला. गोबा सिस्टम क्या है, इसके फंक्शंस के बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि ये सिस्टम जो है बहुत पुराना, जिस तरह से मैंने पहले बता दिया है. तो गांव के एक विलेज के डेवलपमेंट को लेके या कस्टम्स को लेके, ट्रेडिशंस को लेके, उसको मेंटेन रखने के लिए
तो ऑल इन ऑल गोबा का रोल इसमें इम्पोर्टेंट होता है। गोबा जो है वो लद्दाखी वर्ड है। गो असली इसका गोपा है। गो मीन्स हेड, पा मीन्स पीपुल, हेड ऑफ पीपुल। इसका मतलब गोबा इज द हेड ऑफ पीपुल। तो ये गोबा जो है वो इसका सिलेक्शन जो है वो विलेजर्स करते हैं गाँव के लेवल में। जब सारे गाँव वाले इकट्ठे होके, तो इकट्ठे बैठ के फिर उसका देख लेते हैं कि कौन से पर्सन्स को हम गोबा एज ए गोबा हम सिलेक्शन करेंगे। तो उस तरीके से गोबा का सिलेक्शन होता है। असली जो है इसमें हम लद्दाखी में हम युल्पा कहते हैं। युल मीन्स विलेज, पा मीन्स पीपुल, पीपुल ऑफ विलेज। तो गाँव वाल जो गाँव में जो लोग रहते हैं वो लोग गोबा गोबा का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो पुराने जमाने में जो है ट्रेडिशनल रोल ऑफ गोबा, जो पुराने जमाने में गोबा, उस आदमी को गोबा बनाया जाता था। लोगों में सुनने में ये आता है कि उसको गांव के पूरा एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में पता हो, उसको अपने कस्टम्स के बारे में कुछ पता हो। लेकिन गांव में जो है उसका लेजन, जो लोगों के साथ उसका रेपो जो है जिसका अच्छा हो, उस आदमी को गांव का गोबा बनाया जाता था। तो इसका मतलब ये पुराने जमाने में ये नहीं कहते थे कि उसमें वो आदमी, वो बंदा जिसको हम गोबा बनाते हैं वो एजुकेटेड हो या ना हो, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं थे। अभी जो मॉडर्न जो सिस्टम, गोबा सिस्टम जो है, गोबा का सिलेक्शन जो है, उसमें क्या है, अभी हम एक गांव को चलाने के लिए, गांव के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए एक गोबा का, एजुकेटेड गोबा का बहुत जरूरी समझा गया है लोगों ने। तो जिसके माध्यम से अभी आप लद्दाख में आप देखोगे तो लद्दाख में सारे गोबास जो है मोस्टली जो है रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गोबा बनाया गया है। जिस तरह से उसमें से मैं भी एक हूँ। तो हमें क्या होता है, फंक्शन के बारे में आप लोगों ने हमसे पूछा है। सबसे पहले जो गाँव में पानी का जो इश्यू होता है, पानी का सिस्टम, जो इरिगेशन कैनल्स में गाँव को किस तरह से वाटर सप्लाई करना होता है, तो उसमें हम गोबा का एक गाँव के सारे गाँवों में से एक बंदे को हम चूज कर देते हैं जो गाँव के जो वाटर सिस्टम को लुक आफ्टर करने के लिए, जिसको हम छुरपन बोलते हैं। तो इस तरह से गोबा के अंदर, गोबा तो हो गया हेड ऑफ पीपुल, तो उसके अंदर जो है वो असिस्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे गांव में 4 हेमलेट्स है, एक हेमलेट्स में से एक आदमी को हम एज ए मेंबर्स चूज करते हैं गांव वाले, जिसको कि गोबा के असिस्टेंट्स कहते हैं। हेमलेट्स अगर 4 होंगे तो असिस्टेंट 4, हेमलेट 5 हो गया तो गाँव के हिसाब से, वो पॉपुलेशन के हिसाब से वो चूज करते हैं। तो इस तरह से गोबा के असिस्टेंट 4। तो इसी तरह से जो मैसेंजर्स, जो 4 हेमलेट्स में 4 बंदे को हम मैसेंजर्स बनाते हैं, जिसको कि हम कुटवाल्स कहते हैं। तो गोबा के अंदर हो गया मेंबर्स और कुटवाल्स, जो कि गांव में पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहाँ पे कामकाज के लिए आएंगे, या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पे आएंगे। तो सारे गांव वालों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम उन कुटवाल्स को हम बता देते हैं कि फलानी तारीख को इस तरह का वहाँ से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ रहे हैं, तो आप इनको इन्फॉर्म करो। तो इस तरह से गाँव के कामकाज को हम चलाते हैं। अब फंक्शंस के बारे में आपने बोला था, तो वाटर इश्यूज को, जिस तरह से पहला पॉइंट मैंने दिया था आपको वाटर इश्यूज के बारे में, तो एग्रीकल्चर लैंड्स के बारे में गोबा सिस्टम जो पुराने जमाने से इन एग्रीकल्चर लैंड्स को ऑक्यूपाई करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं। सारे जो गाँव के जो लैंड्स हैं वो गोबा के अंदर आते हैं। इसमें कि चाहे वो सैंड हो, बजरी हो, उसमें सॉइल हो, कुछ भी हो, लेकिन गोबा के परमिशन के लिए, गोवा से परमिशन लिए बगैर जो है किसी को वहां से कोई रेता या बजरी या सिंदूर उठाने का कोई इसमें उसमें वो पावर नहीं होता है। तो ये सब गोवा के अंडर होते हैं। जो बाकी नंबर 3 जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो लोगों में पैदा होते हैं, जो 2 घर में आपस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, तो उसका जो है रिजोल्यूशन जो है, उसका सोल्यूशन जो है वो गोबा के थ्रू हम यहाँ पे गाँव में कराते हैं। तो नंबर 3 जो रिचुअल्स,
जो गाँव में जो पूजा होते हैं, गांव के लेवल में जो पूजा होते हैं, साल में हर एक गांव में 2-2 3-3 बार डिफरेंट रिचुअल्स का वहाँ ऑर्गेनाइज करना होता है। तो ये सब कुछ गोवा ही कर लेते हैं गाँव का। तो हार्वेस्टिंग जो गाँव में सोविंग सीजन की बात करेंगे पहले। जब जमींदार फार्मर्स को जब सोविंग सीजन का जब टाइम आ जाता है, तो उसमें गोबा ही आप सारी उल्पास के साथ बैठ के टाइम ले लेते हैं कि डेट फिक्स कर देते हैं कि फलानी तारीख से मार्च के इस तारीख से हमने अपने गांवों में सोविंग सीजन को स्टार्ट करना है। तो उसके हिसाब से जो है सारे गांव वाले एक साथ गोबा हेड पे गोबा जो है विलेज का हेड होते हुए उसके मेंबर्स, उसके जो असिस्टेंट्स, उसका जो मैसेंजर्स, सारे मिल के जो है वो अपना मतलब फॉर्मेलिटीज पूरा करके फिर जो है वो सोविंग सीजन का स्टार्ट करते हैं। तो हार्वेस्टिंग सीजन में भी जब फसल पक जाते हैं तो उस वक्त जो है तो पूजा परफॉर्म करना होता है। उसका डेट फिक्स जो है गोबा ही कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो गांव में होते हैं, मतलब कौन सी तारीख को, कौन सी डे को जो है वो हार्वेस्टिंग सीजन हमारा अच्छा रहेगा कटिंग करना है, तो वो डेट जो है वो डेट फिक्स वो बाई कर लेते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल गांव को, एक गांव के सिस्टम को चलाने के लिए जो है गोबा का रोल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से अभी आ गया है, अब आजकल के दौर में पंचायत का सिस्टम आ गया, काउंसिल सिस्टम आ गया, ये सब जो है वो अभी 10-20-30 साल ही हुआ होगा, लेकिन सदियों से इस गाँव को लुक आफ्टर करते हुए सबसे ज्यादा रोल जो है वो गोबा का ही रहा है। और गोबा का रोल जो है जिस तरह से 200 साल पहले था उससे भी आज ज्यादा है। गोवा के पूछे बगैर कोई भी फंक्शंस, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गाँव में नहीं आते हैं। तो सब कुछ सारा गाँव का दर व मदर जो है वो गोवा सिस्टम पे ही है, गोवा पे ही है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी जो लद्दाख में जितने भी रजिस्टर्ड गोवा है उसमें से मोस्टली जो है वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस गोवा यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे हमें, मैं एक बात इस पे आप लोगों से जोड़ना चाहता हूँ कि गोवा सिस्टम के बारे में जो पिछले साल सितंबर में जो एक वर्कशॉप श्रिष्टी जी, आशीष जी और डॉक्टर नमगेल जी जो एनजीओ 4-5 मिलके हमें एक सारे गोवास को एक ही प्लेटफॉर्म में लाके गोवा सिस्टम्स के बारे में आप लोगों ने हमें वर्कशॉप दिलाया, तो उससे गोवा सिस्टम में काफी बेहतरी आया है। और उसके बाद जो है बाकी उस वर्कशॉप में क्या क्या डिस्कस हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में मेरे साथी मोटुप जी जो ऑल लद्दाख गोवा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वो बता देंगे। बाकी हम इतना चीज हम जरूर कहेंगे कि हमें बहुत एनकरेजमेंट मिला, तो गाँव में जाके काम करने का हमें बहुत हौसला दिलाया उन्होंने। तो फंक्शंस के बारे में काफी हमें कंफ्यूजन थे, तो वो सब कुछ दूर किया गया है। और मैं एक चीज आपसे ये कहूंगा कि इन फ्यूचर अगर इस तरह का वर्कशॉप या ट्रेनिंग्स अगर सारे गोवास को साल में अगर 2 बार आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे तो इससे गोवा के सिस्टम को बेहतरी लाने में और इसके फंक्शंस के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने का इसमें बहुत उम्मीद है। तो एक बार फिर से आप लोगों को इस क्वेश्चन आंसर में मुझे मौका देने का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, Stobdan Lejule. So I hope the translation has worked fine for most of you. And we will switch to English now, and we will translate it for the Gobas wherever they are, also in Hindi. So basically, something that already Stobdan Le in his intervention spoke about Goba's role. So something that already Stobdan spoke about of relevance of the Goba and his role in the natural resource management and conservation. But I would request Namgail to expand a little bit more on what does it mean in the current context, especially with so many changes happening in the ecology in relation to climate in Ladakh.
And so what role does the Goba has in this context? And generally, strengthening of local governance, why would it be important in this rapidly changing environment of Ladakh? Yes. Over to you, Namgail. Now 2-3 devices here to kind of convey the message through, because I think the link that you sent later that worked. Now I'm running that on my phone. So yeah, first of all, thank you so much everyone for coming together to hear about us, the Goba system in Ladakh, as Shrishtee and Stobdan and Ashish already mentioned, that it's a very unique traditional governance system that we have in Ladakh. And as they said earlier, that there were a lot of confusions between the government and the villagers. The villagers thought that the Goba represents them, and the government thought that it's a government employee working for them in the village. So I think there was a bit of a conflict of interest, which I think the Gobas did not realize. And we also, to be honest, did not realize until very recently when we talked to some of the government officials that Shrishtee mentioned, when they said, wo to jo hum kahenge wahi karenge, means like, it's a government employee. And the villagers, they don't represent the villagers in that sense. So there was a lot of confusion. And now I think what is happening is that, as Shrishtee already referred to, there are 3-4 layers of governance now, and it's very confusing. Again, the UT administration, we have the hill councils and the panchayati raj and the Goba system. And so among all of this, if you were to ask me which is the most important governance system, then obviously it is the Goba system, which the villagers really identify with. They think that the Gobas really represent them well, and all the village activities and everything are conducted in accordance with the Goba and the Goba system. So I think I'll just leave it there, and we can discuss that further later. But Shrishtee asked me what is its relevance today in terms of governance, environmental governance and natural resource management and all of this. And a lot of things are changing. So if Goba system were to remain relevant, then it's very important that they evolve and start working to strengthen it further. And how that can be done is that, for example, under the Goba system, there are some within that administration system, there are some members, some people who look after different aspects of the village. For example, there is one who looks after the distribution of water, to equitable distribution of water to all the villagers, and he is called the Churpon. Chu means water, Pon means the leader. And then similarly, there is somebody called Lorapa, who also comes under the Goba system. The Lorapa takes care of all the stray animals. When the stray animals come down from the mountains and go in the agricultural fields and feed there, that person's job is to just catch the animal and put in some captivity and then find the owner. So that kind of things, these are the roles of different members of that administrative council. But as we can see now, especially in the western part of Ladakh, in areas where the development has taken a front seat, and many of the things, for example, the land-based economy is not that slowly is kind of getting to the backstage. With that, the role of many of these members, the people who kind of looked after these aspects that I just told you about, they become less relevant. And more relevant are the aspect of tourism, for example, that is really growing very fast. And oftentimes there's unregulated tourism. A
lot of people coming to villages and doing all kind of things, desecrating cultural elements like stupas and all. Some people just climbing up stupas, and tourists do all kind of stuff. And pollution, of course, garbage is a major issue. And more recently, when we talk about wildlife conservation, then free-ranging dogs killing all the wild animals, that is a major issue. So I think within the Goba system, we need to think about a mechanism to deal with some of these modern issues. And then I think if we kind of insert some of these in the Goba system, then the Goba system would become more relevant, and it can be strengthened further, and it can become more relevant. And so that is something that Ashish and we have been talking and see how we can reform the Goba system, inserting some of these and also making it more democratic, like gender equality and all. I mean, there are some issues that gender representation is skewed towards the male Gobas, and there are, I think hardly the few women Goba, if ever. So I think these are some of the things that we are thinking about. And I think just yesterday I had a conversation with Stobdan that if we can just start from one village. Now he said that now they have formed a association. Now they are in a much better position to really bring about these reforms and then work towards improving it and strengthening it further. So I was just talking with him yesterday that maybe we can start from his village. And then Ashish and we are, planning something similar in Zanskar in the coming months. So basically, I think there are a lot of elements there. I just wanted to kind of focus on some of these issues to make a Goba system more relevant. And if there are more, of course, it's I think their connection dropped. So maybe we can move to I think anyway Namgail was concluding his points. So maybe we can move towards what he's already started speaking about, some key analysis that emerged from our studies about the Goba system in general, about how is it speaking to the idea of democracy, its relationship with the panchayat, the whole issue of party politics and other such things. So maybe Ashish, you can maybe briefly expand on some of these points and what have you found in the study? Sure, thanks, Shrishtee. So I think Namgail is already, like you're saying, he's already mentioned a few things, so I won't repeat those. I think, like Stobdan has said, the Goba system, even though it's very old, and we now also have the panchayat system, about which I'll just mention in a couple of minutes, it still remains very, very, very relevant. This is especially the case with villages that are much further away from Leh. But even those around Leh, there is still significant relevance of that. So that's what we found in our study. We went to several villages in 3 or 4 parts of Ladakh. The second thing I think is that despite this relevance, there is very inadequate recognition, official formal recognition of the system. We don't know, as Stobdan mentioned, that there is a legal status of what is called nambardar. So many of the Gobas have actually got this legal status as nambardars, which is an old system that essentially placed these people under the revenue department of the then JNK government and now the UT administration, to be able to collect taxes, which is no longer the case, it was earlier, but also act as a sort of a government intermediary with people, make sure that government lands are protected and things like that. So there is a registration of many of the Gobas as nambardars, and through that they also get a stipend of 1,500 rupees a month. But what we feel is that many of the other and sometimes more critical roles, like the ones that Stobdan had spoken about, are not actually recognized in the law or formally in any place. So which means that there is no necessity for the UT administration or the Hill Council or the panchayat to actually consult the Goba in these critical matters, like on land and water or on grazing,
pastures and things like that, even though they have actually quite an important role there. And this sometimes creates confusion. People also don't know which is the authority on certain matters like this. Sometimes there are contradictory decisions that could be taken between, say, the Goba and the other formal institutions. So there is a great need for clarity on the relative roles of the four, in that sense, sort of four governance structures here. There is the Goba, there's the panchayat, there is the hill council, and there's the union territory administration. The other very important thing we found was that for people, the Goba remains also very, very important, probably much more important than the panchayat and the sarpanch, because they believe that it's a apolitical role. It is chosen by the entire village. It's not chosen by political parties, which is what happens with panchayats. And so this was something that was mentioned repeatedly to us, that for us, this is, the Goba represents the whole village, not just the BJP faction or the Congress faction or something else like that. That has not necessarily remained the case everywhere. We find that party politics has entered even the Goba function some places, but primarily it is still seen as an apolitical role. We also found that across many of these villages, like Stobdan said, much of what the Goba does is in consultation with the entire village assembly, the Yulpa. In that sense, it's a form of direct democracy, which can be much more powerful than even the panchayat or the Gram Sabha under the constitutional provisions. But again, this is not necessarily always the case. Sometimes, especially when Gobas continue for a long period of time, there can be a certain centralization of power and not as much democratic functioning in the whole village. Last couple of points, I think the relationship with the panchayat. Now, panchayat is the one which has been active for about 15-16 years in Ladakh, which brings in all the money. So all the government money for development works, etc., it comes in through the panchayat, and so therefore it is a very powerful institution. In some senses, more powerful than the Goba. And insofar as the panchayat functions can also impinge on land issues, water issues, etc., there is a potential clash there. Where the sarpanch and the Goba work well together because they know each other or whatever, it works very well. Where there is a tension or a conflict, it can be very problematic. One last point, that we found also that whereas earlier the Goba was a very desired position because there was a lot of status involved and things like that. And also because earlier, if you became a Goba, then many of your functions, like having to take care of your livestock or your farms, would be taken over by other people in the village. A lot of that has now broken down. And so, in fact, the Goba is often seen as a burden. The position is seen as a burden because you have to do everything that the village needs you to do, but you also have to do your own job or earn your own income or whatever it is, and take your livestock out and do all of that. So we find that because of that, the system of choosing the Goba has changed from one of, as Stobdan was explaining about a person who knows the village well or an educated person, etc. Now in many villages, it's by rotation. Every household has to nominate a Goba in the year or for 2 years. And that means that often also people are chosen who may not necessarily know or represent the village very well. So these are some problems that are also coming into the system. These are the main things, Shrishtee, that we found. Yes, thank you so much, Ashish, for covering most of the key analysis point. And I would now maybe like to go to Kunzang, as I was mentioning during my initial intervention, that there are limitations of this system as well, as we see in many other traditional systems in the country. And maybe Kunzang, you can describe more what those limitations are and how do we see it moving forward. And what needs to change at a society level, at a family level to look at some of these issues. Yeah, over to you. Sure, thank you. Although I was not really involved with a study, I just helped in a couple of meetings and arrangements. Definitely, Goba system is an important traditional governance. Kunzang, maybe you can maybe switch off your camera because we can't hear you very well. Okay. Can you hear me? Hello? Hello? Yes, now we can hear you. Yeah.
Yeah, as I was saying, although Goba system is an important traditional governance system and should be strengthened. Can you hear me? It's very low, Kunzang. Is it the audio or Much better. Much better. Go ahead. I might have sorry for that. So I was saying that Goba system is definitely an important traditional governance system and should be strengthened, but it lacks inclusion of women. Like I would like to say the inclusion of women as well as marginalized people, and um, with a motive to strengthen this governance system, we should definitely look into these loopholes as well. And in Ladakhi household, majority of decisions or planning is done by women. So I'm not sure why it was never like discussed in the past, and it should be discussed now as well. And I spoke to President of Women Alliance today, Anish Shundol, and she did mention about few incidences where in the past, even for Goba gathering, like even for village gatherings, women were prohibited, or they were not. They were asked to send men, like male attendant or members for the meeting also. So I think these are the things that we should consider. Even if the same importance is given to certain families, I think inclusion of all the villagers will strengthen the governance system more, and it will give ability to all, like households or women, like gender, to participate and give their best. Like obviously, because it hasn't been done, women were not in majority or in Goba systems as well. So I think we should maybe emphasis on bringing more women to participate in gatherings. Yeah, I would like to say that. Thank you. Yeah, thanks, Kunzangle. And I think it's also about how even if women become part of the Goba system, it's like they will have to do their household work as well as manage a village. And so the traditional role of women only doing household work and men only doing outside work has to also in some ways maybe thought through. Yes, absolutely. I think it will take some time, but in a modern household, like husbands cooks and take care of kids as well. So maybe with time, these things, the responsibilities that women are supposed to take care of will be shared or taken up by other family members. We hope so. Hmm. Yeah, thanks for bringing that up. And maybe we will now move towards the recommendations that came out of this study from what as 5 collaborating civil society organizations we found, and then in larger discussions with various community members, with government bureaucracy, and other civil society actors in Ladakh. And so maybe I'll welcome Karma Le and Ashish Le to speak about those recommendations. But first, over to you, Karma Le, if you can maybe speak a little to the aspects of better recognition of Goba's role and the importance of sixth schedule and new clearer lines of governance and a law that clarifies the role of Goba and incorporates more of traditional functions. So Karmale will speak in Hindi, and we will translate what he's saying in English in the chat box. Is that okay, Karmale? ठीक है. जुले टू ऑल. तो मैं थोड़ा गोबा और इनके गवर्निंग सिस्टम जैसे थोड़ा सा कितने चेंजेस आया है उनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे. जैसा गोबा ट्रेडिशनली हमारा अभी जैसा तोब्दान ने भी बताया, नमग्याल ने भी बताया कि हमारे यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे
जो पहले पहले जमाने में जब जिस जमाने में ये पंचायती राज नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो गोवा ही सब कुछ पे लीड कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था गांव की तरफ से, डेवलपमेंट के तौर पे, किसी भी तौर पे। और गोवा का रूल बताया कि हमारे यहाँ पे गांव में बहुत सारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे जैसा फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जमीन के सिलसिले में, और जैसा कुछ मियाँ बीवी के बीच में जो झगड़ा होता है, ये सारा जिससे कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सारा वो चीजें के ऊपर गोवा का बहुत अच्छा रोल होता है, उसको वो एमिकेबली रिजोल्व कर लेते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे चीजों में गोवा इन्वॉल्व था। उसके बाद फिर धीरे धीरे चेंजेस हुआ। अभी गोवा की बाद अभी ये पंचायती राज आया। पंचायती राज आने के बाद अब फिर हमारा 1996 में हमारा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आया, अभी यूटी लद्दाख आया। तो इन बीते 20-30 सालों में बहुत से सारे चेंजेस हुआ है। तो मैं थोड़ा सा गोवा की रूल और ये जो ब्यूरोक्रेसी और ये इनके बीच में थोड़ा सा होने की जरूरत है, रूल में थोड़ा सा या रूल चेंज करने की जरूरत है। उसके बारे में जहां तक मुझे समझ में आता है वो बताने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसा गोवा अभी तक का जो गांव में, हर गांव में जो जैसा मैंने बताया, सारा रिचुअल्स का और सारा जो जैसा पानी का जो वाटरिंग सिस्टम है, सारा जो ट्रेडिशनल जितने भी जो सिस्टम्स है, उसमें अभी भी सारा वो रिप्रेजेंट करते हैं। और डेवलपमेंटल का अभी सारा जितने भी जो दारोमदार, वो सारा अभी हर जगह पे ये हर गांव में, लद्दाख में पंचायती राज ने लेना शुरू किया। लेकिन बीच बीच में थोड़ा क्या होते हैं कि कुछ एरियाज में जैसा गोवा बहुत स्मार्ट है, थोड़ा एक्टिव है, थोड़ा और सरपंच थोड़ा सा थोड़ा स्लो है, उस सिलसिले में कन्फ्लिक्ट ज्यादा बहुत सारा क्रिएट होने की समस्या हमने देखे हैं। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट 2 साल में गांव में बहुत बड़ा एक नेशनल लेवल पे एक स्कीम आया, जल जीवन मिशन करके, जो हर जगह में लद्दाख में बहुत तेज रफ्तार से हुआ। तो उस जल जीवन मिशन का सारा जो पावर है सरपंच को दिया हुआ था। तो उसमें है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो जिसका जो काम करने का सिस्टम में बहुत सारे लैकिंग था। फॉर एग्जांपल गांव के बीच में किसी को गोवा को ना पूछे और किसी से ना पूछे, पर जो कॉन्ट्रैक्टर आया उन्होंने पूरा खोद के ले गया और उसको ऐसा ही रख दिया, मतलब बहुत सारे डैमेज किया, और उसके बाद कोई भी नहीं सुना। तो उस बीच में गोवा और गांव की जो नंबरदार के बीच में काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की समस्या बहुत जगह पे आया। तो ये सारा अभी आने वाले दिनों में अभी गोवा का थैंकफुली हम लोगों के लद्दाख में अभी डिस्ट्रिक्ट गोवा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नंबरदार जो एसोसिएशन बने हैं, तो उन लोग अगर अभी इनका थैंकफुली रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, तो ये सारा फॉर्म होने के बाद सारा एडमिनिस्ट्रेशन और ये गवर्निंग सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है कि इनको एकदम जो रोल को एकदम स्पेसिफाई करने की, डिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये गोवा के साथ बहुत सारे हमारा जो लद्दाखी ट्रेडिशनल सिस्टम जुड़े हुए हैं, अगर ये हमारा गोवा सिस्टम में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो गया, तो हमारे जो अभी तक का जो कल्चरल जो सिस्टम है, जो कि हमारे हर कोई भी काम अभी तक थोड़ा ले में बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी गांव में हम लोगों का जो भी फार्मिंग सिस्टम है, वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम है, अभी भी वो ये चल रहा है। तो ये जैसा अभी जल जीवन मिशन में हमने ये चीजें देखने को मिला, तो ये चीजें खत्म होने में अगर नहीं करेंगे, इसमें रोल में थोड़ा सा इजाफा नहीं करेंगे, थोड़ा सा युवाओं को भी ये अलग से नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा सा बहुत जरूरी समझता हूँ। इसलिए अभी लोगों में ये हुआ है कि अभी देखिए यहाँ पे हिल सेल की बात अभी यूटी बने हैं, और यूटी बने हम लोगों के यहाँ पे कोई 4 साल हुआ, और इस 4 साल में बहुत सारे हमने एक्सपीरियंसेस देखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी है, हिल काउंसिल पहले सारा जो लद्दाख का जो प्लान वगैरह सारा हिल काउंसिल के पास
था। लेकिन अभी का जो प्लानिंग सारा सिस्टम है वो सारा ब्यूरोक्रेट के हाथ में चला गया। तो वो इसलिए हम लोगों को डर लगता है कि लद्दाखियों को कि अगर वो गवर्निंग सिस्टम अगर ब्यूरोक्रेट के हाथ में चला गया तो धीरे-धीरे उनको मालूम नहीं ना हमारे गाँव के बीच में सिस्टम में क्या होते हैं। तो वो ऊपर दिल्ली में बैठ के उसका प्लान बनाएँगे, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हम लोग लद्दाख के लोग जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो नंबरदार एसोसिएशन है, जितने भी नंबरदार्स है, जो डिफरेंट सोशल सेक्टर का स्टेक होल्डर्स है, हम लोग सब मिलके थोड़ा 6 शेड्यूल की डिमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 शेड्यूल अगर हम दें क्योंकि लद्दाख 97% लद्दाखी जो शेड्यूल ट्राइबल एक्ट के अंदर आते हैं। तो 56 अगर पर्सन अगर वो ट्राइबल उसमें अगर पॉपुलेशन है तो उसको अपना हक है। तो इसलिए हम अपने हक को मतलब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारे पिछले 1 साल से इसके बारे में लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। वो इसलिए कि इस जैसा गवर्निंग सिस्टम में दरार ना आ जाए क्योंकि लद्दाखियों को ये डर है। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत लंबा चलने वाले हैं, ये एकदम रिज़ॉल्व नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में हम सब बैठ के खासकर जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो अभी गोवा जो एसोसिएशंस है, उनको उनकी कंधों पे बहुत बोझ आने वाले हैं, तो उनको थोड़ा-सा बैठ के बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस के साथ बैठना पड़ेगा, सारा सिस्टम को वो करके थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर सब लोगों का भी यही राय है, आने वाले दिनों में अगर ये 6 शेड्यूल के अंदर हम लोग ट्राइबल के अंदर आ गया, तो ये सारा ऑटोमेटिकली हम लोग सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा-सा मुझे ये थोड़ा डर जैसा लग रहा है। तो इतना ही बताऊँगा। Okay, thank you so much, Karmale. You have raised some important points regarding the demands and the recommendations, and also how the centralization of decision making is really impacting the local governance. And so maybe some other aspects related to recommendations we can come in question and answers, and I would encourage the audience because we are slowly moving towards the end of this conversation. We have just the last aspect and then we will open this up for discussion. So if you have questions or comments, please feel free to now start putting them in the chat box and we will take them once this gets over. But I would now like to invite Motup basically to also speak on the aspects of Goba Association. So, Jule Motuple, अगर आप Tsering Motuple is a secretary of the newly formed Goba Association, and अगर आप थोड़ा ये बता पाएं कि ये गोबा एसोसिएशन कैसे आया, क्यों आया, और अभी उसका स्टेटस क्या है, और आने वाले समय में कुछ मुटुप्ले प्रेसिडेंट है गोवा लद्दाख गोबा एसोसिएशन है गोबा एसोसिएशन के। तो अगर आप थोड़ा ये बता पाए कि गोबा एसोसिएशन का अभी मेन रोल क्या है और आने वाले समय पे आप उसका रोल क्या देखते हैं, इस पे अगर आप थोड़ा सा शेयर कर पाए. सो आई एम आस्किंग मुटुब्ले अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ द गोबा एसोसिएशन दैट हैज बीन जस्ट फॉर्म्ड एंड व्हाट दे सी एज द फ्यूचर ऑफ इट. व्हाटएवर ही सेज वी विल पुट दैट इन चैट इन इंग्लिश. हाँ जी मोटू प्लीज. जी सबको नमस्कार. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये वेबिनार कॉन्फ्रेंस करने के लिए शुक्रिया अदा करूंगा. तो उसके बाद जो बाकी हमारे साथियों ने काफ़ी डिटेल से गोबाओं के बारे में बताया, तो हमने तो ज़्यादा सुना नहीं क्योंकि हमारी इसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स आ गया. तो ज़्यादा ना बताते हुए मैं आपका ये जो गोबा एसोसिएशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बोलने ये वो जानकारी देने की कोशिश करूंगा. देखिए जो लास्ट ईयर आप लोगों ने जो यहाँ पर चांसपा में ये एक 2 दिन का सेमिनार किए थे, तो उस दौरान ये हमारे सारे गोबा लगभग 70-80 गोबा वहाँ पर प्रेजेंट थे. तो टोटल तो हमारे ये जो लेह डिस्ट्रिक्ट में 113 गोबा है जो गवर्नमेंट ने जो रिन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से वो किया है, वो 113 है. तो 113 में से 70-80-90 जो है उसमें अटेंड हुए थे. तो उसमें हमारा डिटेल से डिस्कशन हुआ था
जिसमें ये डिसाइड किया था कि भाई देखो हमें एक गोवा काफी हर चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ, उसमें से एक था ये गोवा एसोसिएशन हमें होना चाहिए। तो ये जो है काफी देर तक डिस्कस होने के बाद, 2-3 बार डिस्कशन होने के बाद लास्ट में ये तो सितंबर में हुआ था मेरा आपका जो कॉन्फ्रेंस जो है, तो अक्टूबर 20 मेरा ख्याल था, अक्टूबर 20 को हमारा जो ये क्या बोलते हैं एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ था, तो एसोसिएशन में फॉर्म हुआ और मुझे जो है वहाँ प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया और हमारे स्टोबदन जी को जनरल सेक्रेटरी, और उसमें के बाद वाइस प्रिंसिपल हमारा मंजूर जी है उनको, तो सब मिला के 11-12 एग्जीक्यूटिव मेंबर मिला के 11-12 ये एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया था। तो तब से लेके हम लोग कुछ ना कुछ काम गोबाओं के बाईस करते आए हैं। तो हमारी ये गोवा एसोसिएशन बनाने का खास मकसद ये था। अभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो गोवा सिस्टम जो है वो तो कभी क्या बोलते हैं 300 साल से चल रहा है। तो तब से यहाँ लद्दाख में जो है ये इसका कोई एसोसिएशन तो नहीं था जो हर इस गोवा का जो भी प्रॉब्लम हो उसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली हमने वो जो है डिस्कस करने के बाद हमने जो एक रूल्स रेगुलेशन बायलॉज और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, उसमें जो है हमने सारा चीज जो इंडिविजुअली गांवों में जो गोवाओं को जो कोई प्रॉब्लम आता है तो उन प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, और गोवाओं को जनरली एक गोवा तो हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनका जो गोवाओं का जो भी प्रॉब्लम हो उनको गवर्नमेंट के पास वो करने के लिए, गाँव से भी डिस्कस करने के लिए, तो हमने ये गोवा एसोसिएशन बनाया था। तो इसका हमने रूल रेगुलेशन जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है काफी सोच समझ के बनाए। तो इसमें जो है हमारे ये डॉक्टर त्सेवांग नमग्याल जी भी शामिल थे। तो लास्ट पे हमारे वर्किंग का जो हमने ड्राफ्ट बनाया, फिर ड्राफ्ट को जो है हमने ये जो गोवा एसोसिएशन के वर्किंग कमेटी है उनसे अप्रूव करके तो वो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए जो भेज दिया है। तो उसमें काफी फॉर्मेलिटीज था, क्योंकि हमने इसमें एक ये है कि इसका नाम रखा था ऑल लद्दाख गोवा एसोसिएशन। तो लाल लद्दाख गोवा एसोसिएशन नाम रखने की वजह से ये तो एक स्टेट लेवल पर हो जाते हैं, तो ये जो इनको भी जो है ये जो इंडस्ट्री वाले जो जहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई इनको दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता है होम मिनिस्ट्री से। अब जो है 2-3 महीना उसमें लग गया, फिर भी वहां से भी अब नो ऑब्जेक्शन आ गया। अब जो लास्ट स्टेज पे है कि मेरे ख्याल से इनका कोई अभी एक पब्लिक नोटिस करना है, वो भी कर चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी 2-3 हफ्ते में जो है वो रजिस्ट्रेशन होंगे। तो अभी हम लोग ज्यादा ये वो नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं काम जो है थोड़ा स्लोली चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि हमारा ये जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हमें जो जो आपने ये इसका जो कमेटी का वो रिकमेंडेशन जो था वो तो ये था, पहले तो ये जो हमारा गोबाओं का एज जो है वो 60 ईयर फिक्स किया है। हालांकि सारे किसी उसमें पोस्ट में जो है ये एज लिमिट नहीं है। तो इसमें और एक प्रॉब्लम आ रहा है, एक नंबरदार और एक गोबा करके। तो गोबा नंबरदार का जो है उसका तो कोई फंक्शन भी जो गवर्नमेंट ने फिक्स रखा था ईस्ट वाइल चेन के गवर्नमेंट ने, तो वो बहुत ही लिमिटेड है। उनको तो कोई जैसे ये बना के रखा था, कोई गवर्नमेंट का मैसेजर जैसा बना रखा है। तो हमने उसमें जो हमने बाई लॉज रूल रेगुलेशन बनाया उनका नंबरदार का कोई जिक्र नहीं किया। ये रहेंगे गोबा एसोसिएशन। तो गोबा एसोसिएशन होने से गोबा जो है तो गांव वालों की मतलब की तरफ से वो नॉमिनेट किया हुआ है। तो उनका जो है पावर भी जो पूरा मतलब पहले से जो पावर आते हैं उसी पावर फंक्शन पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट भी जो हम लोग जितना अभी जैसे खासकर गाँव में भी आता है, ले में भी जितने भी गवर्नमेंट का पेपर्स आते हैं, जैसे किसी को गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इशू करना हो, करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके ऊपर जो है गोबा का सिग्नेचर चाहिए। वो जैसे किसी को गन का लेसन चाहिए, उसके ऊपर भी गोबा का ये जो सिग्नेचर चाहिए। ये सारा चीज जो है सारा ये जो है जैसे किसी को ना वो लेना हो ना क्या ST सर्टिफिकेट लेना हो, बाथ सर्टिफिकेट लेना हो, उन सब पर जो है अभी गोवा की सिग्नेचर से अभी जो गवर्नमेंट जो हमारा ये जो UT गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम जब ये एक प्रॉब्लम उस दिन आए थे, वो जब हम लोग इसे
नो ऑब्जेक्शन ला रहे थे स्टेट गवर्नमेंट से, जो नॉन इसका जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कहीं कहीं पर कहा कि भाई देखो नंबरदार के अगर गोवा एसोसिएशन करेंगे तो आप लोगों को जो है गवर्नमेंट से परमिशन लाना पड़ेंगे कि ये बनाने से पहले। लेकिन हमने कहा नहीं, ये नंबरदार नहीं है, ये गोवा एसोसिएशन है। तो उस पे जो है नो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वो हमारे यूटी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये नो ऑब्जेक्शन मिल गया। तो मेरे ख्याल से ये जो है ये जल्दी ही जो है अब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने वाला है। उसके बाद जो है प्रॉपरली जो है हम लोग ये जो क्या बोलते हैं ये एसोसिएशन जो है, हाँ बिल्कुल मतलब रेगुलरली काम करने की वो काम शुरू हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं जब ये जो 2-3 हफ्ते के बाद जो रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन का कॉपी मिल जाएंगे, तो उसको वेट कर रहा है हम। उसके बाद जो है सारे गोवाओं को बुला के एक जनरल बॉडी मीटिंग हम करना चाहते हैं। और उसमें जो हमारे जो अभी जो जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो बाकी जो है उसमें और ये हमारा हुआ था, ये क्या बोलते हैं उसमें ये वहां पर एज का हुआ था। और एक उसमें ये रिकमेंडेशन हुआ था कि भाई देखिए इनका ये जो ऑनरिज्म जो है, ये तो बहुत साल पहले ये जो उन्होंने फिक्स किया था, ईस्ट रॉयल स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया था। उसके बाद तो काफी साल हो गया, लगभग काफी साल हो गया, तो इनको टच नहीं किया। तो हमने ये जो सेक्रेटरी रिन्यू वाले से मिलके तो उनको भी हमने ये एक्सप्लेन किया है, उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। देखिए कि ये जो ये ऑनरियम जो है ये बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल ये बढ़ना चाहिए, जो 1500 लेके आगे। इसी तरह हम लोगों का वो जो रिकमेंडेशन था अच्छा, इनके बाद वो जो ये अभी एक बात उसमें ये हुआ था कि ये लड़कियों का वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है। गोवा जो सॉरी उसमें गोवा बहुत कम है। उसमें भी हम लोग जो है डिस्कस कर रहा है कि वैसे तो इसमें कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है कि मतलब गाँव वालों ने या गोवाओं की तरफ से कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं रोक तो नहीं लगा है। अगर कोई बनना चाहते हैं तो मैं बड़ी शौक के साथ, जो लड़की होशियार हो, ये गाँव वालों के साथ जो काम जो हम लोग कर सकते हैं, उनका कोई उस पर ये तो नहीं है कि बंद तो नहीं है, लोग वो भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग ये बात कर रहा है। थर्डली जो है हमने उसमें एक अच्छा वो किया है रूल एंड रेगुलेशन में, उसको फिर रखा है कि ये जो गोवा जो है वो जो है ये जो नॉन पॉलिटिकल होगा, ये उसके लिए रूल में भी हमने लिख दिया कि उस जो गोवा बनेंगे उस रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है उनको डिक्लेरेशन देना होगा। भाई देखिए हम जब तक वो गोवा पे रहेंगे, गोवा के पोस्ट में रहेंगे, तब तक जो है उसमें जो है किसी पार्टी में एक्टिव पार्ट नहीं ले लेंगे। वो इसलिए किया गया है कि गाँव में अगर कोई वो एक नंबरदार है, वो किसी पार्टी से या एफिलेटेड हो या उसमें एक्टिव पार्ट लेता हो, तो दूसरी टाइप का जो है वो साइड का जो है किसी दूसरे पार्टी का जो है वो सोचें, वो मतलब डिस्कस करेंगे भाई देखो ये जो है इस पार्टी का, ये तो गाँव में जो है वो डिवीजन होने का डर है। तो इसलिए जो है हमने जो है वो नॉन पॉलिटिकल रखा है। तो इसी तरह जो है इस तरह रखा है। तो मेरे ख्याल से अब मुझे ज्यादा नहीं कहना है, इतना ही कहना है। थैंक यू जी थैंक यू मुटुप्ले। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी स्टडी से भी निकल कर आए थे, आई थिंक वो सब इंक्लूडेड हैं इस एसोसिएशन के मेमोरेंडम में। सो the points that came out of this study, especially in respect to the limitations and certain important positive aspects of the Goba system to be retained as we move further on, have been part of the memorandum of association. So, which is great. So, first of all, thank you to all of you for your comments and for your reflections about the study. We will now move to the questions, and there are already a few by people who are attending this. And so I'll ask these questions, and whosoever feels comfortable to reflect on them and answer them, please go ahead. Natalie has asked if one of the speakers could describe the steps of the assembly's decision-making process. So how does the village assembly, the Yulpa, takes the decision? So just to translate it quickly in Hindi, that एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि जब आप किसी भी युल्पा में डिसीजन लेते हैं तो उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है. They want to know
So anybody, please, if you can respond to this, it will be great. हाँ जी, तो गांव के लेवल में जो भी डिसीजन लेना होगा तो गोबा खुद इसका निर्णय नहीं लेते हैं। ये जो भी फैसला करना होता है तो वो युल्पा से पूछ के करते हैं, सारे गांव वालों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद जो मेजोरिटी डिसीजन जो होगा, मेजोरिटीज अथॉरिटी, तो उसमें जो भी निर्णय लिया जाता है, जो मेजोरिटी जो भी डिसीजन करते हैं तो उस पे अमल करके रिजोल्यूशन वहां पे लिख देते हैं। तो उस हिसाब से जो है उस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। जी, थैंक यू स्तोबदान। ले किसी और को कुछ इस पे ऐड करना है? एनीथिंग? पहले युल्पा का साल में 1 2 3 ऐसा कुछ फिक्स्ड है या जब भी चाहिए तब होती है? युल्पा का ऐसा आशीष जी, युल्पा का गैदरिंग जो है जब कभी भी गाँव से रिलेटेड, गाँव के पानी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इश्यू अगर वहाँ पे रेस हो जाते हैं तो उस वक्त जो है युल्पा को बुलाते हैं। तो इंडिविजुअली गोबा खुद उसमें डिसीजन नहीं लेते हैं, नई जॉब नहीं देते हैं, गाँव वालों से पूछते हैं। पूछने के बाद जो भी मेजोरिटी का जो आंसर होगा वो हम दे देते हैं। अदरवाइज कोई इंडिविजुअली गोबा वो रिस्क नहीं लेते हैं। मीटिंग का तो ये है आशीष जी, मीटिंग जो है ये ऐसा है कि इसका कोई डेट फिक्स नहीं होते हैं। जब गोबा के पास कोई आदमी कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं तो वो गोबा जो इमीडिएटली या मेंबर होता है या फुटबॉल होते हैं उनको बोल देते हैं भाई देखो मीटिंग रखो इतने बजे इस दिन, गाँव वालों को। तो वो सब बुला देते हैं मीटिंग पे। तो गोबा वहां जाके जो कंप्लेन है उसको वहां पर एक्सप्लेन करते हैं डिटेल से। जब डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे तो गाँव वाले समझ जाते हैं, तो उसमें गाँव वालों में डिस्कशन होता है डिटेल से। उसके बाद जो है वो जो डिसीजन लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट होते हैं। Thank you. Shrishtee, if I can just add, I think we haven't been able to discuss it much, but one of the special regions of Ladakh is Changthang. मैं Changthang के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ. And in Changthang, the major livelihood is nomadic pastoralism, and the Goba plays a very important role also in deciding when from one pasture there should be migration to another pasture and then for going ahead. And also between several nomadic populations, if there are conflicts in the pastures, etc., then it's the Gobas that play a crucial role. And here also it's the entire unit of nomadic pastoralists that is called and consulted before a decision is taken on when to move and where to move. ये मैं चांगथांग का थोड़ा ऐड कर रहा था. Thanks. Yeah, thanks, Ashish. And so there's another question which is by Sujit Sinha, and also Vera has asked, and I think both these questions are related, so I'm just clubbing them together, that the current challenges of increasing government pressure, uncontrolled tourism, the kind of development that's coming in the whole Trans-Himalayan regions, with, of course, exacerbated by the climate change issues. What are the local solutions that our community is coming up with, and what is the role of the Goba in the changes and transformations that are taking place in the region? Maybe you can add Sanskriti's question in the same. And also, I think Sanskriti's question is a little bit more related to that, about the limitations, which is that the caste and the women issues are not, how can we create actually more inclusive spaces to take decisions, and what can be done to design the discussions and deliberations in a way that these marginalized sections and their representation and their voice becomes important in these deliberations. So maybe I think all of you, if can reflect from your own perspective of why this is important, it would be great. तो हिंदी में करना है? हाँ, तो नामगैल, I don't know whether you're translating there. No, I didn't. He understood. मैं समझ गया जी. Okay, so मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो गाँव के लेवल में जो वेस्ट मटेरियल्स का जो मसला है आजकल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो साल ब साल ज्यादा आते जा रहा है. तो हम गाँव के लेवल में क्या करते हैं कि सारे गाँव वाले इनमें इन्वॉल्व होते हैं.
तो गांव में आप देखिए अभी सेग्रीगेशन सेंटर जो वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से हर ब्लॉक में बनाया है। ले में ऐसा कोई मसला नहीं है, अभी हफ्ते में 1-2 बार वहाँ में वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके ले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या चीज़ है, पहले गाँव के लेवल में सारे गाँव वालों को इकट्ठे करके हम इसके फायदे के बारे में, इसको वेस्ट मटेरियल्स को मतलब कलेक्ट करने के लिए सबका मतलब रोल्स क्या है, तो उसके बारे में अवेयरनेस दिलाते हैं लोगों को। उसके बाद अभी कुछ मेरे ख्याल से हर गांव में ऐसा सिस्टम बनाया है कि वेस्ट मटेरियल्स को जो है, अभी आप देखेंगे हमारे गांव की बात कीजिए, वहाँ पे लद्दाख में जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो मेरे ख्याल से 99% जो है टूरिस्ट अलची से होके ही जाते हैं। अभी बड़ा मसला है वहाँ पे भी वेस्ट मटेरियल्स का। हम ये चाहते हैं, अभी नमग्याल जी ने भी बताया था कि लोग तो ऑलरेडी अवेयर है वहाँ पे। आप जो अवेयर कौन नहीं है, अवेयर जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग अवेयर नहीं होते हैं। चलती बस में खाली बोतल को फेंक के जाना, हर चीज को वो लोग साइड में फेंक देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हालांकि अच्छी गांव में इंट्रेंस से लेके लास्ट तक हमने वो साइन बोर्ड बनाया है, डोंट थ्रो द गार्बेज, तो पढ़ लेते हैं वो लोग तब भी मतलब ये वो नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ऐसा एक वर्कशॉप वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसा एक इनिशिएटिव हम ले लेंगे कि सारे इलाके के लिए मैसेज जाएंगे कि युल्पा को उसमें इन्वॉल्व करके वेस्ट मटेरियल्स को कंट्रोल करने के लिए हम एक वर्कशॉप करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि थ्रू मीडिया हम ये मैसेज दे देंगे कि जिस तरह से हम एक गाँव से हम इस पॉजिटिव स्टेप को हम स्टार्ट करेंगे तो वो सारे लोग समझ जाएंगे कि तो वेस्ट मटेरियल्स को कंट्रोल करने के लिए। हमने तो ऐसा किया है, जो जैसे ले में है तो यहाँ से लेके ये जो K2 जो खरदुंगला के नाम से पॉपुलर है, वहाँ खरदुंगला पे जो है काफी टूरिस्ट जाते हैं। तो टूरिस्ट जाने के बाद जो है वहाँ का सारे रास्ते में जो वो जो सारा केड़ा कुटका जो फेंका हुआ आते हैं। तो हमारे यहाँ ले में एक जो जितना म्यूनिसिपल के अंदर आते हैं, स्कारा से लेके वहाँ गंगलेस तक, तो उनका एक एसोसिएशन भी है, लद्दाख ये ले फुदो एसोसिएशन करके, सोसाइटी करके। तो उनसे मिलके तो साल में गर्मियों के सीजन में एक दफा हम लोग सारे उनके मेंबरों को लेके गाँव से रिप्रेजेंट, जो हमारे मोहल्ला से रिप्रेजेंटेशन लेके वो एक दफा वो एक बार सफाई करते हैं। तो उसका हम जो है ये म्यूनिसिपल कमेटी वालों का मदद लेते हैं। तो वो जो है गाड़ी वगैरह वो सप्लाई करते हैं। तो इस वक्त जो है खरदोंगला पे जो है एटलीस्ट हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हर वहाँ पर कुछ वो क्या डस्टबिन, बड़े बड़े डस्टबिन लगे हुए हैं। उसके अलावा जो है यहाँ हर महीने में एक बार गाड़ी जाके वो उठा के ला के वहाँ सेग्रीगेशन सेंटर पे ले जाते हैं। तो इस तरह यहाँ जो है हम सफाई रखते हैं। उसके अलावा वहाँ कोने कोने में कुछ जगह पर, क्योंकि लोग गाड़ी में आते हैं और बंडल में रास्ते में छोड़ के जाते हैं, और कहीं कुछ पॉइंट पर इस वक्त जो है वो CCTV लगा रखा है, ताकि हमें पता चले कि भाई देखो ये कौन फेंक रहा है। तो एक दो को आप ये पकड़ लिया जाए तो उसके बाद दूसरों को थोड़ा सा लेसन मिल जाए, ऐसा इस तरह व्यवस्था भी हम लोग यहाँ ले में बना रहा है। So Shrishtee, just to add there, and I think the question on the inclusivity also, that I'll come to that, but just talking about this environmental governance and all of that, as I mentioned, we talked to many villagers in different parts of Ladakh, and they really understand the importance of managing these things within the Goba system. So that is something, and I think the Gobas really need to do some futuristic thinking also if they want to remain relevant and want to further strengthen this institution. That is something that we talked about, and they are also willing to do that. So that is important. So on the question of inclusivity, that is something that so we are talking about gender inclusivity, we are talking about the age, youth are not represented well in the Goba system, but that is something that is changing actually with the Goba system evolving also. Now you might have heard that many villages, the Gobas are appointed
on a rotation basis. So it's not a very covetous position anymore, given that, and also the very little honorarium that they get, so it's just not many people want to become the Goba. So once all of these change, the Goba system becomes stronger, then more and more people would like to become Goba. In that, then definitely we should not leave behind the youth and the women. And something that an issue that we also kind of came up for discussion was the lower caste. We have some lower caste people, and for that is something that we also try to we convey to you also, that there tends to be an inertia like of all these things. It does not go that easily, but slowly as the things are developing, the society is modernizing itself, that feelings, that attitude is slowly kind of dissipating, as going away. But that will take some time when it comes to a lower caste person becoming a Goba, for example. That might take a little bit longer. But as far the women and youth are concerned, they are already kind of coming into the picture, and they would be more represented, I think, in the coming years. And I think another very important thing that we need to understand is also that if a Goba is a little bit older person, and that is something that we are talking about, pushing the age limit to a little bit 70 or 75, why not? So in that case, then whoever kind of becomes the Goba should be a little bit more experienced. They should understand all the systems of the village. And so in that case, if a youth really understands that, have that understanding and the capacity, then I think nowadays we are seeing there are a lot of youth Gobas in many parts of Ladakh. Yeah, so that's what I have to say on the inclusivity part of the question of Sanskriti. Just to add a couple of points there, I think one of the most important issues with regard to, for instance, tourism, or the increasing, where companies, corporations, etc., are eyeing Ladakh for so-called development and commercial extraction and all of that, is the issue of land. Where traditionally either the Gobas, Yulpa, or the council had control over which lands can be used for what. Now that control is taken over by the UT administration. So unlike as what Karmale and others have been saying, all of you have been saying, unless Ladakh actually gets much more autonomous powers under the 6th schedule or in some other form, this will be a very, very big issue that is going to be faced. The other, I think, quickly is also in the report, is that traditionally all the villages had customs, or called tims, and maybe as we've recommended, each village also needs to discuss new issues that have come up, which should also then become part of the customary rules, just like the waste issues that they've spoken about, or others. Like if a road is coming through the village, who is to take the decision? I think so. Some of these things actually need to also go through the tims, the customs also need to go through some sort of evolution. And that's also a very, very crucial role the Gobas can play. Yeah. Interestingly, just yesterday, I saw an article in one of these magazines where somebody is like, again, I think there are different, sections of the society trying to create confusion, so that his point was that if we kind of get 6 schedule, then many of the customs and traditions, for example, the caste system and the polyandry, for example, all of those would be revived under that, so that it's just creating confusion. I mean, that's entirely six schedule gives power to the autonomous councils to either throw out a rule or kind of retain it or strengthen it further. So they're simply kind of creating this confusion. Just yesterday, I read in one of the local magazines that somebody was writing, they even talked about the Goba system. Actually, some elitists actually are trying to revive the Goba system. But I think if all these things happen, then many of the old bad things in the society, they would be revived and revitalized, is something that he was making a point, which is completely kind of false claim.
Thanks. I wonder if Kunzang or Karma have any reflections on these questions, or generally it's something that you want to speak about. Do we still have time? I mean, I think Ajangle and everyone has already covered most of it. Sure. Karma, do you want to reflect on any of the questions? नहीं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जैसा अभी मैं थोड़ा क्योंकि यूटी बनने के बाद बहुत सारे अभी टूरिस्ट की वजह से बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आ रहा है। डेवलपमेंट तो हो रहा है, कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसा हमारे गोबा साहब लोग को बता रहे थे कि दो तरह की टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे ना। एक तो जैसा मैं अब बुरा ना मानिए, एक तो इंटेलेक्चुअल टूरिस्ट हम बता सकते हैं, एक जैसा ना गार्बेज टूरिस्ट बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे अजीब अजीब करके झील के बीच में जाके गाड़ी चलाते हैं और झील के बीच में बैठ के विस्की पी के और उधर ही सारा चीजें झील के आसपास में फेंक के आते हैं। तो ये सारा चीजें अगर इस तरह से करते जाएंगे तो हम ये लद्दाख एक फ्रेजल ये बहुत सी यूनिक इलाका है, क्योंकि हमारा जो सारा माउंटेन उसके रीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसी चीज होते रहेंगे तो कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे गवर्निंग सिस्टम में कोई है नहीं, क्योंकि वो जो कंट्रोल है रिमोट दिल्ली से चलेगा। हमारे जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो जो कि ग्रास रूट लेवल पे जो प्लानिंग करते हैं उनका कोई हक नहीं है। इवन हमारे हिल काउंसिल में भी इतना पावर नहीं है। तो मैं इसलिए ये सोचता हूँ कि जैसा आशीष ने बताया कि लैंड वाला इश्यूज है बहुत सारे एरियाज में। जैसा मेरा अपना गांव से लैंड 20,000 अभी लैंड लोग अभी बहुत सारे उसके लिए उनको मतलब गवर्नमेंट ले रहा है। खासकर वो लैंड हम लोग भी एग्रो पैस्टोरलिस्ट है और वहां से ये चीजें सारा, क्योंकि यूटी के पास ये सारा चीजें हैं सारा। पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास था, हिल काउंसिल के पास पावर था, वो रोक सकता था। अभी हम लोग एकदम फ्री है, कोई रोक टोक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा जहां तक सवाल है कि लॉन्ग टर्म में आने वाले दिनों में हम लोगों का ये जो 6 शेड्यूल वाला जो मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगा इन सारी चीजों में, क्योंकि लद्दाख दुनिया से बहुत ही अलग उसके क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ वो रीजन वाइज मतलब बहुत ही यूनिक वो एरिया है। तो मैं तो यही कहूंगा जी। Thank you, Karmale. We have one last question and then we will conclude by Sujit, who's asking, how does the Goba system relate with the school systems and interaction with the schools? I think in general, the broader aspect is how does the Goba system and the education system and interaction with the young people in schools is. Namgail, can you unmute? अब ऐसा है जो यहाँ पर जो है हर गाँव में गवर्नमेंट का स्कूल है। जो गवर्नमेंट स्कूल में जो गोबा का रोल जो है ऐसा है, सो स्कूल में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे उनको स्टाफ का प्रॉब्लम्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम्स हो, वो भी टीचर जो है जो वहाँ का हेड होगा, हेड टीचर होगा, वो जो है वहाँ हर गांव में वो भी बना है, क्या बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी बना है। तो उनके थ्रू वो मैनेजमेंट कमेटी में जो है गोबा भी एक मेंबर बना हुआ है। तो उसके थ्रू वहाँ स्कूल में जो प्रॉब्लम हो, जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोग जो है यहाँ जो जैसे कौंसल में हो या जो एग्जीक्यूटिव कौंसल एजुकेशन वहां तक जाते हैं, या जो है सेक्रेटरी है यूटी में, जो भी प्रॉब्लम हो वहां तक जो है हम लोग पहुंचा देते हैं। तो ये वही करते हैं, इतना ही रोल है उसमें। Okay, thank you. So that's all for the questions, and I think we are also at the end of the conversation. First of all, I would like to thank all of you for joining today from Ladakh. I know
internet wise it is not so easy, but thanks for solving all the technical glitches and joining us. And I also thank all the attendees. Uh, Before we close, maybe Ashish wants to come in with some comments. Yeah, I just wanted to say that this is one of the studies that we and others are doing, trying to understand traditional governance systems across India, which are still alive. I noticed Usha Lachungpa is on the call also, and we know that Sikkim is one of the few states which has formally recognized the traditional governance system up in the Trans-Himalayan areas there. And but these systems still exist in many parts of India, especially Adivasi indigenous areas. And so I think trying to understand these much more and then coming up with some kind of a national level picture of how they are still relevant and what would be the ways by which they could be recognized and what would be the relationship with the panchayats and gram sabhas. This I think is a very, very important role that many of us can and should be playing. I just want to add that. Ashish, as we talked, it'll be really good to have an exchange program, especially I think for the Gobas of Ladakh, it'll be very inspiring to kind of see the Pipan system there, which is very strong. So that could be really good. Yeah. मैं 2 शब्द लास्ट में मैं ऐड करूंगा. तो आशीष जी, हम ये कोशिश करेंगे गोबा का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद, तो मैं ये चाहूंगा कि एक वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज करेंगे. उसमें 1 साल का हम एक्शन प्लान्स बनाएंगे. तो उस एक्शन प्लान्स में जो है तो 1 2 3 4 करके हम पॉइंट्स रखेंगे. उसमें सबसे पहले जो है वो गार्बेज का इशू है वो रखेंगे. फिर जो सिस्टम में गोबा जो रजिस्ट्रेशन बनने के बाद गोबा जो है वो मतलब क्या क्या डिमांड्स होंगे. सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन बनने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल पे एक ऑफिस सेटअप करने का हम प्लाट के बारे में हम वो अप्लाई कर सकते हैं. तो ब्लॉक लेवल पे या जोनल लेवल पे गोबा सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए तो एक्शन प्लान बनाएंगे. तो उसमें हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट ले लेंगे उस वर्कशॉप में. तो वी शैल इनवाइट ऑल ऑफ यू to participate in the workshop so that we can make the action plans for 1 year. Yes, Stobdan, and all of us will be happy to join. And as Namgail was also saying that, and Usha Lachungpa has also mentioned in the chat that it will be really important to have, and it's a good idea to actually create an exchange program between the Sikkim and the Zumsa system, and also possibly thinking about coming together of a gathering of people who are still practicing these systems and communities across India, and what can we learn from each other, what are our challenges, and so how then we move forward. So I think that will be a very powerful gathering to have, and a very powerful and important one to have. So I think thank you all for yes, Kunzang. Sorry, just one last point, because I think Goba's and Dr. Namgil's audio was not working then. I spoke about how important is it for inclusion of women, and then that could actually start from the family of the Goba or families of people that we know. So when we have meetings, bring women along. Like that could be first step we do. Instead of like expecting them to be Goba, at least bring them in meetings first and let them understand how it works. I think this could be first initiative of bringing women and marginalized families who have not been part of Goba system yet. Yeah, that's my suggestion. A very important point. I think it has to begin from all these groups and people who are part of the association, who are part of the civil society, to start creating spaces and let women and people from marginalized sections speak for themselves and not others speaking for them. So I think hopefully the Goba Association will also keep that as their one of the key agenda points, along with the garbage and other such important matters. Okay, anybody else? No, thank you. Okay, great. Thank you so much. We'll stop the garbage tourists from coming to Ladakh. Garbage
Thank you everybody for joining. It was a good discussion and we will be sharing a recording also of this discussion with everybody. And thanks for your time and thanks for your energy. Jule. Thank you. Jai Jule. Namgail, can you just कहाँ गए Namgail? If you can just, I'll just take a picture on the screen. थोड़ा सा पास. Thank you. All right. Thank you. Bye. Thank you, Jule.